pharmohub.pk. अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फिजिकल फार्मेसी का। वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 ऑफ फिजिको केमिकल प्रिंसिपल्स। जस्ट आप काइंडली मुझे कंफर्म करते हैं कि आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी। तो एक बंदा काइंडली टाइप कर दे। ऑलराइट, तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमारे पास 6 टॉपिक्स हैं: सॉल्यूशंस, सॉल्युबलाइजेशन, एडसॉर्प्शन, आयोनाइजेशन, हाइड्रोलिसिस और माइक्रोमेरेटिक्स। आज हम लोग बेसिकली स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशंस और इसी को एंड करेंगे। नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह दो दो टॉपिक से करके हमारे कवर हो जाएंगे। So talking about the solutions, we all know that a solution is a homogeneous mixture of two or more substances at molecular level. And a solution can exist in any phase, like it can exist in solid phase, liquid phase, or a gas phase. Similarly, it can also be defined as a homogeneous mixture of chemical substances which has same physical properties and chemical composition. Apart from that, it can also be defined as a homogeneous mixture of solute and solvent which does not interact chemically is called solution. And also, a solution may be defined as a homogeneous mixture of two substances that consist in one phase. Means after adding solute in solvent, we will have just one phase. That will be the solution phase. Talking about the pharmaceutical solution, solutions are a dosage form. I have already explained what are dosage forms to you. Prepared by dissolving the active ingredient in aqueous or non-aqueous solvent. The example of pharmaceutical solutions are syrups. Syrups basically they are aqueous solutions, and also they have some active ingredient and other ingredients to make it a dosage proper dosage form. So now we have some definitions like what is a system. Since we are talking about physicochemical principles, we need to see some basic definitions regarding solution when we are dealing with them. First of all, is system. A system basically is a bounded space which is under consideration, or anything under consideration. We know that is called a system. And phase is a distinct homogeneous part of a system separated by definite boundary. Means phase will be that boundary that distinguishes between two different systems. A kind of dispersion. Dispersion consists of at least two phases with one or more dispersed phase containing in a single continuous phase. Means particles of one material are dispersed in continuous phase of another material. मिसाल के तौर पर सस्पेंशन आपने देखी हैं, मतलब जो समटाइम्स पाउडर आते हैं बच्चों के लिए, और उसके अंदर पानी डालना होता है, तो उसके पानी डाल के हम लोग उसे मिक्स करते हैं। वो एक डिस्पर्शन की टाइप है। वो किस तरह कि उसके अंदर देखें एक चीज जो पाउडर है डेट इज डिस्पर्स्ड, वो पूरी तरह मिक्स तो नहीं है लेकिन वो फैला हुआ है इन अ कॉन्टिन्यूअस फेज, इन एक्सटर्नल फेज। इस केस में जो एक्सटर्नल फेज है वो वाटर था हमारे पास। Dissolution. Dissolution is the mixing at the level of individual atoms, molecules, or ions. And binary solutions are solutions that consist of basically two substances. There are three types of dispersions now: true solution, colloidal dispersion, and forced dispersion. Talking about their definitions, true solutions are defined as a mixture of two or more components that form a homogeneous molecular dispersion. Their particle size is always less than 1 nanometer. And colloidal dispersion, they have particle size from 1 to 500 nanometer, and they can either be heterogeneous or homogeneous. And like forced dispersion, they are heterogeneous dispersed systems in which dispersed phase particles are larger than 500 nanometer.
True solutions have one phase system. Colloidal solution they are either heterogeneous or homogeneous, and forced dispersions are always heterogeneous. Light scattering effect. True solutions cannot scatter light. Colloidal solutions they do show Tyndall effect, and lastly coarse dispersion may or may not scatter light. अब सॉल्यूशंस में देखें जो सिरप्स होते हैं उसको हम लोग अगर शेक ना भी करें बच्चे को मेडिसिन देने से पहले तो वो सेपरेट नहीं होंगे क्योंकि वो एक दूसरे के अंदर मिक्स हुए होते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास कोलाइडल डिस्पर्शन होती है वो भी सेपरेट नहीं होती, लेकिन जो इमल्शंस और सस्पेंशंस होती हैं यूजुअली वो सेटल डाउन हो जाती हैं, तो उनके ऊपर लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज, ताकि वो जो हमारे पास केकिंग हुई हुई है बॉटम पे उसकी पूरी तरह रीडिस्पर्स हो जाए। एग्जांपल्स टू सॉल्यूशन की है सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर। Similarly, examples of colloidal dispersions are starch and milk, and examples of coarse dispersion are emulsion and suspension. Emulsions are basically liquid-liquid dispersions. ये thermodynamically unstable system होता है जिसमें एक oil और एक water layer कह लें आप, in short, वो आपस में उनको हम लोगों ने with the help of an emulsifying agent उनको mix किया होता है। और suspension is a solid liquid dispersion जिस तरह मैंने अभी इससे पहले आपको example दी है। Now solute and solvent. सोल्यूट जब हम लोग सोल्यूशन की बात करते हैं तो जो थोड़ी मिकदार में चीज होती है हम लोग उसको सोल्यूट बोलते हैं, और जो ग्रेटर अमाउंट में होती है उसको हम लोग इसी तरह सॉल्वेंट बोलते हैं। लेकिन अगर हम लोग जनरली बात करें लिक्विड और सॉलिड सोल्यूशन की, तो जो लिक्विड होता है उसको हमेशा हम सॉल्वेंट कहते हैं और जो सॉलिड होता है उसको हम लोग हमेशा सॉल्यूट बोलते हैं। इसी तरह अगर एक सोल्यूशन है दैट कंसिस्ट ऑफ वाटर, तो हम लोग वाटर को हमेशा सॉल्वेंट कहते हैं, और जो इसके अंदर चीज होगी जो भी वो चाहे लिक्विड हो या सॉलिड हो हम लोग उसको सोल्यूट बोलेंगे, regardless of the quantity of water used or other substances used. Now, types of solutions according to the states. We have already discussed this in our previous classes. Like type of solution is solid and solid. Example is alloy or amalgam. Amalgam, we know that it is used in dentistry. Liquid in solid solution, they are example of hydrated salts. For example, copper sulfate dot 5H2O. Gas in solids, dissolved gases in different minerals. Solid in liquid, salt solution in water. Liquid in liquid, alcohol in water. Gas in liquid solution, example is aerated drinks like carbon dioxide in drink, like in colas and other beverages. Solid in liquid, iodine vapors in air. Sorry, this is solid in gas. Liquid in gas, example is humidity in air, and gas in gas, example is air. So there are three stages of solution process. Step one is separation of solute molecules. Solute सबसे पहले जो है वो separate होगा, so that इसके अंदर जो intermolecular forces हैं उसको overcome किया जा सके और non-ionic interactions of solute को ज्यादा किया जा सके. This requires energy, hence this process is endothermic. Step two is separation of solvent molecules. Solvent molecules should also overcome intermolecular forces. This step also requires energy and it is endothermic. After getting separated, step three is the mixing of the separated solute and solvent molecules. So attractive bonds between solute and solvent particles are developed. Solvation or hydration occurs. What is solvation? Solvation का मतलब होता है कि solute solvent के अंदर mix हो रहा है, और जब specifically solvent water होगा तो उसको हम लोग hydration बोलेंगे. This process release energy, hence it is exothermic. Types of solute are non-electrolytes and electrolytes. Non-electrolyte, we know, they do not ionize when dissolved in water. For example, sucrose, urea, glycerine, and electrolyte do conduct electricity, and they ionize when they are dissolved in water. They may be strong electrolytes, for example, sodium hydrogen chloride and sodium sulfate, and weak electrolytes, for example, ephedrine and phenobarbital. Next is physical properties of a substance. They may be extensive properties or intensive properties. Extensive properties, they depend on the quantity of the matter.
कि सिस्टम के अंदर कितना मैटर है उस चीज पर डिपेंड करेंगी उनकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज लाइक मास एंड वॉल्यूम. However, intensive properties, they are independent of the amount of substance like temperature, pressure, density, surface tension. And physical properties can be divided into three main types like additive properties, constitutive properties, and colligative properties. Additive properties depend on the sum of the properties of all constituents, or it can be defined as physical properties which depend on the total contribution of the atoms in the molecule of the sum of the properties of the constituent in the solution, like molecular weight. जब भी हम लोग molecular weight की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर ग्लूकोज का है तो कार्बन के 6 एटम्स का, हाइड्रोजन के 12 एटम्स का और ऑक्सीजन के 11 एटम्स का टोटल मास जो है वो हम लोग क्या करते हैं वो प्लस करते हैं. तो ये एडिटिव प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि ओवरऑल सब चीजों पे डिपेंड कर रही हैं. उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज हैं दे डिपेंड ऑन द अरेंजमेंट एंड नंबर और काइंड ऑफ द एटम्स विद इन अ मॉलिक्यूल. It can also be defined as the constitutive properties that mainly depend on the arrangement to a lesser extent on the kind and number of the atoms, like refraction of light, electrical properties, and solubility. और इनमें से कुछ जो है वो एडिटिव प्रॉपर्टीज भी हैं. और नंबर 3 है हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज that mainly depend on the number of particles of a solution, like osmotic pressure, vapor pressure, flowing, freezing point depression, and boiling point elevation. So next important हमारे पास टॉपिक है solution का, वो होता है हमारे पास concentration expression. अगर हम लोग concentration की बात करें तो concentration क्या होती है? The amount of solute present in a given amount of solution is called the concentration of solution. कि कितना सोल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर ये हमें बताती है कंसंट्रेशन. ऑन द बेसिस ऑफ दिस सॉल्यूशन कैन बी डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्वेंट ज्यादा होगा और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट रिलेटिवली ज्यादा होगा. उसको इन सब को एक्सप्लेन करने के हमारे पास एक्सप्रेस करने के 6 हमारे पास मेथड है. परसेंटेज एक्सप्रेशन, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन एंड पार्ट्स पर मिलियन. इनमें से हम लोग बहुत सी चीजें जो हैं वो अपने एफएससी लेवल पे भी देख चुके हैं. सिंपल अगर मोल की बात करूं तो मोल इज द ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ सब्सटेंस और ग्राम इक्विवेलेंट वेट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने भूलना नहीं है. बेसिकली ये क्या है? इट इज द मास ऑफ अ गिवन सब्सटेंस व्हिच विल supply or react with 1 mole of hydrogen cation in acid base reaction or supply or react with 1 mole of electron in redox reaction. Basically ग्राम इक्विवेलेंट वेट होता है कि कितना एक क्वांटिटी, एक सोल्यूट की क्वांटिटी कितने सॉल्वेंट की क्वांटिटी को डिस्प्लेस कर सकती है. अगर वो एसिड है तो कितना हाइड्रोजन वो डिस्प्लेस करेगी, अगर बेस है तो कितने हाइड्रोक्सिल जो है वो डिस्प्लेस करेगी. सबसे पहला जो है वो है मोलैरिटी. मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. इसमें जो मोलैरिटी और मोलैलिटी में फर्क आपको आइडिया होगा कि मोलैरिटी में पर लीटर है और मोलैलिटी में पर किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन होता है. सो मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके यूनिट्स होते हैं मोल पर लीटर. बेसिकली एक जनरल यूनिट है केमिस्ट्री के अंदर जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं टू डिफाइन द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इन स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस. और जो हमारे पास मोलैरिटी है, फॉर एग्जांपल 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग क्वांटिटी सफिशिएंट 1000 ml के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1 मोलर सॉल्यूशन बच जाएगा. तो यहाँ पे बात याद रखने वाली ये है वो ये कि सॉलिड्स और लिक्विड की मोलैरिटी अलग तरीके से निकालते हैं. जो लिक्विड्स होते हैं उनकी एक स्पेसिफिक डेंसिटी होती है, उस डेंसिटी को भी हमने उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करना होता है. However, that's not the topic here. Normality. It is the number of grams equivalent or solute per liter of the solution. ऊपर था हमारे पास number of moles of solute, यहाँ पे हमारे पास number of gram equivalents. Gram equivalent ऊपर मैंने आपको बताया that is this fixed quantity of another substance. तो normality होती है number of gram equivalent of solute divided by volume of solution. ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? वो हम लोग निकालते हैं by dividing weight of the substance to the equivalent weight. इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट उस सब्सटेंस का डिवाइड बाय एसिडिटी और बेसिसिटी. कि वो एक हाइड्रोजन आयन देगा, 2 हाइड्रोजन आयन देगा, एक हाइड्रोक्सिल देगा या 2 देगा, व्हाटएवर.
Next is molality. It can be defined as the number of moles of solute per kilogram of the solvent. इसको हम लोग small m से represent करते हैं और ये हमारे पास इसके यूनिट्स होते हैं मोल पर किलोग्राम। तो मोलैलिटी है, इसको हम लोग बहुत सी जो qualitative properties हैं उसमें उसमें फाइंड आउट करते हैं। Number 4 is mole fraction, ratio of the moles of one constituent of a solution to the total number of moles. For example, एक solution के अंदर दो component हैं, अगर आपने वन की मोलैलिटी निकालनी है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं। इट इज डिनोटेड बाय x एंड वन थिंग जो हमें पता होनी चाहिए वो ये कि द मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस और द टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूशन विल ऑलवेज बी यूनिटी। नंबर 5 इज परसेंट एक्सप्रेशन कि समटाइम मेडिसिन के ऊपर लिखा होता है 2% वेट बाय वेट, 2% वेट बाय वॉल्यूम। वो क्या है? दैट इज अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन 100। वो ग्राम भी हो सकते हैं, एमएल भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द वेट है या एमएल है। तो परसेंट बाय वेट क्या है हमारे पास? इट इज द वेट ऑफ अ सोल्यूट एज अ परसेंट ऑफ टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट बाय वेट जो हमारे पास वेट बाय वॉल्यूम है दैट इज द एमएल ऑफ सोल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसको इस तरह भी कह सकते हैं, इट इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट एज अ परसेंट ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। सिमिलरली वेट बाय वॉल्यूम और मिलीग्राम परसेंटेज भी यही है। Next is parts per million. That is the number of parts by volume or weight of solute per million parts. By weight or volume of solution is called parts per million. और इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि हम लोग इसको यूजुअली वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज चेक करने के लिए लेते हैं और इट इज यूज्ड फॉर वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। Next is ideal and real solution. Ideal solution, as we know, they follow Raoult's law, and real solution does not, do not follow Raoult's law. राउल्ट्स लॉ को आगे डिटेल से पढ़ते हैं, लेकिन डेफिनेशन की बात करें आइडियल सॉल्यूशन की तो आइडियल सॉल्यूशन देयर इज नो चेंज इन प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट, जबकि रियल सॉल्यूशन में तमाम जो प्रॉपर्टीज हैं कुछ हद तक तब्दील हो जाती हैं एंड दे डेविएट फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। So what are the properties of the ideal solution? That during the formation only the dilution or change in concentration occurs. उसके अलावा no heat evolve or absorbs in the system. Volume, sum of volume is equals to the total volume of the solution. For example, इसके अंदर हम लोग ऐसे सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है, लाइक मेथनॉल एंड एथेनॉल, benzene and toluene, methanol and water, etc. And there is complete uniformity of attractive forces between the constituents of an ideal solution. And the constitutive properties of an ideal solution are the arrange of the properties pure individual components. लेकिन चूंकि सारे आइडियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते, सो वी विल मूव टू द रियल सॉल्यूशंस। उसमें क्या है कि वॉल्यूम is not equal to the sum of individual volumes, and similarly some heat does evolve or absorb in or out the system. There is always shrinkage or expansion of the molecules of the components. Real solution can be obtained by mixing the components of different properties. इनके अंदर attractive forces same नहीं होती और they deviate from the Raoult's law in two ways, either positive deviation or negative deviation. If the cohesive forces, the cohesive forces होती हैं जिसके अंदर molecules एक ही solution के आपस में जुड़े होते हैं, the real solution deviate positively. अगर cohesive forces ज्यादा हैं तो positively हमारे पास deviation होगी. For example, acetone water system, benzene and ethyl alcohol, ethanol and water. अब for example जो हमारे पास positive deviation show करते हैं ना, they always boil. वो solution हमेशा दोनों individual components के boiling point से कम पे हमारे पास boil करते हैं. For example, जो हमारे पास ethanol का boiling point है वो है 78.4 डिग्री और वाटर का होता है 100 डिग्री, लेकिन जो इन दोनों का सोल्यूशन है वो बॉइल करेगा 78.2 डिग्रीज पे, तो ये पॉजिटिवली डेविएट करेगा. In contrast to if adhesive forces between molecules of component are greater, then the solution deviate negatively. For example, water and HCl system. Water का जो हमारे पास होता है वो 100 डिग्रीज होता है और HCl -84 डिग्रीज पे
बॉयल होता है। लेकिन जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो ओवरऑल इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है मिलके, वो 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है। तो ये नेगेटिवली डेविएट करता है फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। होता ये है कि जब बॉन्ड्स बनते हैं तो हीट एवॉल्व होती है, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ज्यादा हो जाती है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है और जो सोल्यूशन है वो नेगेटिवली डेविएट करता है फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। Now, आगे explanation है Raoult's law की. It says that any particular temperature, the partial pressure of one component of a binary mixture is equal to the mole fraction of that component multiplied by its vapor pressure in the pure state at this temperature. Basically, partial pressure of any constituent is equal to the multiplication of P naught, that is the partial pressure of pure constituent multiplied by its mole fraction. अब हमने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है, जिसके अंदर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इनकी, कि आप लोगों ने चीजें बहुत डिटेल से पहले पढ़ी हुई हैं। तो लोअरिंग ऑफ वेपर वेपर प्रेशर या वेपर्स क्या होते हैं? वेपर प्रेशर होता है जो द प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड एट इक्विलिब्रियम स्टेट विद द प्योर लिक्विड इटसेल्फ एट अ गिवन टेम्परेचर। और लोअरिंग क्या है कि जब एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसके अंदर ऐड कर दिया जाता है तो एस्केपिंग टेंडेंसी सॉल्वेंट कम हो जाती है। क्योंकि एस्केपिंग टेंडेंसी अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ग्रीन कलर के जो हमारे पास हैं वो सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जब वो आ जाएगा सरफेस के ऊपर तो कम सॉल्वेंट जो है वो वेपराइज करेगा। इसको बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसके अंदर जो मेथड यूज होता है वो मैनोमेट्रिक मेथड इस्तेमाल होता है इसको कम करने के लिए। इसकी डेरिवेशन मैं बिल्कुल छोड़ रहा हूँ। लेकिन हाउएवर जो दो चीजें आपको याद पता होनी चाहिए वो ये कि आपने x2 की वैल्यू निकालनी है इसमें। उसके बाद आपने हमारे पास रिलेटिव फ्लोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में बताना है, और हमने इसकी मोलैरिटी जो है जो मॉलिक्यूलर वेट है वो फाइंड आउट है। ग्राफिकल फॉर्म अगर आप देखें तो ये ब्लू वाली लाइन प्योर सॉल्वेंट की है और रेड वाली लाइन प्योर सोल्यूशन की है, ऑफ सोल्यूशन की है। तो आप देख सकते हैं कि जो सोल्यूशन वाली लाइन है वो नीचे जा रही है, जिसका मतलब है कि जो वेपर प्रेशर है वो सोल्यूशन का कम होगा एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट। नेक्स्ट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट व्हिच vapor pressure of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure. And what is the boiling point elevation? Okay, when non-volatile solute is added, uh, the temperature, you need more temperature to bring that change in boiling. This is called boiling point elevation. Apparatus, इसमें कोटेरियल apparatus यूज होता है। होता क्या है, प्योर सॉल्वेंट में अगर आप देखें तो कोई भी लिक्विड तब बॉयल होता है जब pressure of the atmosphere pushing on the liquid is equal to the pressure of the evaporated molecules. लेकिन जब इसके अंदर सॉल्यूट आ जाता है तो you need to give more energy in order to bring this change. Similarly, इसके अंदर भी हम लोगों ने इसके बुलियोस्कोपिक कांस्टेंट को डिस्कस करना है और इसकी जो है वो मॉलिक्यूलर वेट लेना है। Depression of freezing point में क्या है कि when a non-volatile solute is dissolved in a pure solvent, then it will freeze at a lower temperature than the temperature at which the pure solvent freezes, and the difference between them is called freezing point depression. Beckmann's apparatus यूज होता है, और ये हमारे पास इसका ग्राफ है कि प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ ऊपर की तरफ है, मीन्स के ये हाई टेम्परेचर पे फ्रीज करेगा, और सॉल्यूशन का ग्राफ थोड़ा सा नीचे है, उसकी लाइन थोड़ी सी नीचे है। दैट इज टेलिंग अस के जो सॉल्यूशन में जब सॉल्यूट ऐड हो जाएगा, सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट ऐड होकर सॉल्यूशन बन जाएगा तो वो लोअर टेम्परेचर पे फ्रीज करेगा। Finally is osmotic pressure. Osmosis की बात करें तो we know osmosis is the passage of solvent into the solution through semi-permeable membrane. और osmotic pressure क्या है? That is the pressure greater than that above the pure solvent that must be applied to the solution to prevent that passage. Basically, it is the minimum pressure which needs to be applied to a solution to prevent inward flow of pure solvent across the semi-permeable membrane. So,
इसकी ज्यादा एक्सप्लेनेशन में मैं नहीं जा रहा। ऑस्मोटिक प्रेशर सिर्फ आप इसका फॉर्मूला याद रखें फिलहाल। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू हाइट ऑफ दैट कॉलम, solution density and gravity acceleration। मॉलिक्यूलर वेट सब जितनी भी कोलिगेटेड प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं ये अलग से बेसिकली टॉपिक है सिलेबस में। तो उस उन प्रॉपर्टीज को जब हम लोग रीअरेंज करेंगे तो हम लोग इससे मॉलिक्यूलर वेट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं सब प्रॉपर्टीज का। जो चीज हमने यहाँ पे अब देखी है दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं बेसिकली उनका फंक्शन ये है कि हम लोग उनसे मॉलिक्यूलर वेट्स को डिराइव कर लें। For example, boiling point method में we can use only when solute is non-volatile and when solute does not decompose at boiling temperatures। ये उसका एडवांटेज है, लेकिन इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज ये है कि इट मस्ट बी कैरीड आउट एट डेफिनेट टेम्परेचर, क्योंकि कुछ फार्मास्यूटिकल्स कुछ ऐसी ड्रग्स वो डिकम्पोज हो सकती हैं एट हाई टेम्परेचर। फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग यूज करते हैं ऑन since it only depends on the vapor pressure of solvent, and freezing point method can be easily carried out and yields a high accuracy of results। इसका disadvantage ये है कि it also must carry out at definite temperature, so it is sometimes inconvenient to use freezing point or boiling point method। However, since they must be carried out at definite temperatures, so osmotic pressure is preferable, क्योंकि उसका ऐसा कोई disadvantage नहीं है कि उसको एक खास टेम्परेचर पे ही करना है। तो इसको ऑस्मोटिक प्रेशर को बहुत वाइडली यूज किया जाता है। इसको हाई पॉलीमर्स के लिए यूज किया जाता है लाइक फॉर प्रोटीन मॉलिक्यूलर वेट। ये हो गई बातें सारी फिजिको-केमिकल प्रिंसिपल्स की। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि वो कौन सी रूल्स हैं जिनके लिए सॉल्यूशन बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल ओरल यूज के लिए सिरप्स, एलिक्सर और ड्रॉप्स होते हैं। माउथ और थ्रोट के लिए माउथ वॉशेस, गार्गल्स और थ्रॉट सिरप्स होते हैं। इन ऑर्डर टू यूज इन बॉडी कैविटीज जो सॉल्यूशंस होते हैं हमारे पास वो डाउशेस होते हैं, एनिमास, ईयर ड्रॉप्स एंड नेजल स्प्रे। सॉरी। Or for the use on body surface, we have colloidals and lotions. What are the advantages of solution? Pharmaceutically, they are easy to swallow. They have quick dissolution effect. They are homogeneous. They give uniform dose. They minimize adverse effects in gastrointestinal tracts, and they dilute the irritant action of some drugs like aspirin. कुछ drugs आपके gastric intestinal tract के लिए irritant होती हैं, उनकी डाइल्यूशन तो सीरप जो हैं जो सॉल्यूशंस हैं उनकी डाइल्यूशन कम कर देते हैं, जिसकी वजह से इरिटेंट एक्शन कम हो जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? दे आर बल्की, therefore they are difficult to transport, they have unpleasant taste or odor that is difficult to mask, they need an accurate spoon to measure the dose and less stable than the solid dosage form। मेजर साइंस ऑफ इंस्टेबिलिटी है पता चल जाता है किस तरह के इंस्टेबल हैं, लाइक कलर चेंज हो जाता है, प्रेसिपिटेशन अकर हो जाती है, माइक्रोबियल ग्रोथ और केमिकल गैस फॉर्मेशन। एप्लीकेशंस क्या हैं? दे आर यूज्ड थेरेप्यूटिकली एज व्हीकल्स फॉर ओरल, पेरेंटल एंड टॉपिकल ऑप्टिक ऑप्थेल्मिक एंड नेजल प्रोडक्ट्स। They are also used as flavoring agents, buffer agents, preservatives, suspending agents for a variety of liquid dosage forms। They are present in concentrated stock solutions that serve as the component of extemporaneously prepared products। Sometimes फार्मेसी के अंदर मेडिसिन बना के दी जाती है तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस होते हैं, उसमें से हम लोग अपनी मर्जी की कंसंट्रेशन बना सकते हैं। एंड दे आल्सो यूज्ड एज टेस्ट सॉल्यूशंस that play an important role in analysis of pharmaceutical products of many kinds। However, that is all for solutions। For any queries, join us on our social media sites.